स्कोर है 2-2। कांग्रेस आगे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस आगे वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे। बिल्कुल सचिन पहले जो है अजीत सिंह मेहता से टॉप में आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली सीट से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के उनसे आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। आंकड़ा पलट गया है, 3-1 हो गया है। 3 में कांग्रेस आगे पर बीजेपी आगे, और बीजेपी कहां पर? सिर्फ राजस्थान के अंदर। दीपक जी, अब देखिए आपने जो कहा था उससे एकदम उलट हो रहा है। मैंने कहा था 3-1। आपको मिठाई खिलाई जाएगी, चिंता न करिए। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ेदार है, लेकिन भूपेश बघेल से आगे निकलना आसान नहीं है। और अंबिकापुर के राजा भी उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के राजेश अग्रवाल से है। इस समय अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। उधर देखिए मध्य प्रदेश में 28 पर कांग्रेस, 47 पर बीजेपी। क्या ये फासला एक बार फिर घटेगा? क्या बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस आएंगे? छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटों का सब डिफरेंस रह गया है। 5 सीटों का अंतर, कांग्रेस 30 पर है और बीजेपी 25 पर है, यानी 55 सीटों का हमें मिलने लगा है। 3 राज्यों में आगे चल रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में 3 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। एक राज्य यानी राजस्थान में सिर्फ बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी 4 में से इस समय जो शुरुआती रुझानों में जिसे कहा जाए कि आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने बढ़त ले ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 25 सीट पर है और कांग्रेस 30 सीट पर है। 5 सीट पर बीजेपी आगे निकली। देखिए बीजेपी आगे निकल गई है। बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 45 पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उलटफेर होता हुआ फिर 2-2 का स्कोर हो चुका है। मुकेश जी क्या बोलेंगे? देखिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तक आपकी बारी है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ये पल पल बदलता रहा। कोई नहीं, अभी देखते हैं, फिर से देखते हैं। बिल्कुल सीटों का रुझान भी मिलने लगा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर टॉप के सचिन पायलट ने बढ़त बनाई हुई है। वहाँ अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। तो 50 और 45 मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। इस समय जो है वो फिर से 2-2 पे टाई हो चुका है। 2 राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त ली हुई है। 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त ली हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें 2-2 का स्कोर। मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 45 पर। तेलंगाना में 23 पर बीआरएस आगे, 28 पर कांग्रेस, बीजेपी 2 पर, ओवैसी की पार्टी। सामने आ रहे हैं, रिएक्शन क्या रहे हैं अमित जी? हम जब लोगों को सुन रहे हैं तो यही कहेंगे मीठा मीठा गुड़ कड़वा कड़वा छो, क्योंकि अभी रुझानों में बीजेपी आगे और कांग्रेस का कहना है कि अभी तो काउंटिंग जारी है, इंतजार तो करें। ये जो कह रहे हैं और जिस तरह से उत्साह बीजेपी में है या कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हाँ अभी और कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो इसको गलत पूरी तरह से नहीं ठहराया जा सकता। अभी हम जो देख रहे हैं शुरुआती रुझान है 107 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो वो बहुमत से काफी आंकड़ा उन्होंने जादू एक तरह से इसमें किया हुआ है। लेकिन ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। जब कम से कम 2 राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी तब जाकर के ये माना जा सकेगा, और उसमें भी लीड कुछ बहुत ज्यादा होगी तब ये माना जा सकेगा कि हाँ ये लीड जो है ये परमानेंट है और ये आखिरी जो 17, 18, 20 राउंड तक चलेगी वो कायम रह सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बूथ, सिर्फ एक बूथ है, वो पूरे टैली को बदल देता है। No battery, please charge. टीम के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी टीम जो ये वो लोग हैं जिनको 20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस ऐसे चुनाव कवर करने का, ऐसी काउंटिंग कवर करने का और रिजल्ट्स देने का। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक, ये हमारी सबसे जो एक्सपीरियंस टीम है, ये हर मतगणना केंद्र पर, हर काउंटिंग सेंटर पर है, और हम आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसे के साथ देंगे। ये न्यूज़ 18 के दर्शक बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल सर, लगातार अपडेट हम पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन मोहन जी पिक्चर बाकी है क्या अभी? पिक्चर बिल्कुल जोरदार पिक्चर देखने के लिए मिलेगी आपको। जिस तरीके से राजस्थान में विकास हुआ है, राजस्थान में जो काम हुए हैं और जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे कि पहली बार रिवाज बदलेगा और प्रदेश में कांग्रेस कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ में बनेगी। एक विधानसभा वाइज वर्क किया है तो इसमें स्थितियां बिल्कुल क्लियर है। अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए
मेरे साथी और आप लोग बीजेपी को लेकर उत्साहित है, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआती रुझान है। हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत मिल सकते हैं क्या अभी? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, संकेत क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसी तरह हम बात करते हैं। बात ये है कि बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं। इस बार जो विपक्ष आएगा वो भी नहीं निभाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि 1 बाय 1 सीटें बदलेंगी। तो विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, सड़क पर हम उतरेंगे, जनता की आवाज बनकर उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को जो हक है वो मिलते रहे और पार्टियां जो वादे उन्होंने किए हैं उसको जुमला कहकर पीछे न हट जाए। तो पार्टी जो वादे करके सत्ता में आने वाली है, ये योगेंद्र जी का कहना है कि वो अपने वादे पूरे करें, इसे लेकर हम विपक्ष में कड़ी भूमिका निभाएंगे। शैलेंद्र जी, अभी भी दावा है कांग्रेस का, जीतेंगे तो हम ही साहब। देखिए, प्रारंभिक रुझान है उसमें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए, गारंटी वादा खिलाफी किसने करी? 2018 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस किसानों से जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, युवाओं से जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए, महिलाओं से जो वादे किए सुरक्षा का वो पूरा नहीं कर पाया। तो ये तमाम बातें राजस्थान की जनता ने देखी है, भुगती है। सिर्फ इन्होंने अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, चाहे महिला की आबरू लुटती रहे, ये कुर्सी से चिपके रहे, चाहे भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया, ये कुर्सी से ही उठने को तैयार नहीं हुए, कहते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। तो आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को जहां तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई हो, जहां लाचार कमजोरी दिखती हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयानों में कि भाई भ्रष्टाचार इसलिए ठेकेदारों में और इन अधिकारियों में साठगांठ है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और कुशासन को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घिरती भी आ रही है। विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास न्यूज़ लेकिन राजस्थान पर भी है। राजस्थान के लोगों का यही वजह है कि सबसे ज्यादा इस वक्त लोग न्यूज़ 18 राजस्थान को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे सटीक नतीजे यहीं पर सबसे पहले और सबसे थे। मनोरंजन जी, अब तक के जो रुझान सामने आए, इसे लेकर क्या कहें? देखिए, आप देख सकते हो, आप कह रहे थे, मेरे से सवाल किया आपने कि आरएलपी कहीं दिख नहीं रही। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आरएलपी भी दिख रही है और ये जो दोनों पार्टियां कह रही है सुशासन देंगे, बीजेपी कह रही है हमारी सरकार आ रही है। आप बताइए, 18 के अंदर जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब 11 पेपर लीक हुए और जब यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए तो बार बार हनुमान बेनीवाल जी संसद के अंदर कह रहे थे कि ईडी भेजिए और इसकी जांच करवाइए, ईडी भेजिए, अब ईडी नहीं भेजी। विश्लेषण हर कोई प्रस्तुत कर रहा है और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में अभी भी दोनों प्रवक्ता डटे हुए हैं। बीजेपी का मानना है कि बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है रुझानों में। तो कांग्रेस कह रही है थोड़ी देर रुक जाइए, ये सब कुछ उलटफेर हो जाएगा। बाहर इंतजार करना होगा क्योंकि ये रुझान बढ़ है, नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, वो ऐसे चेहरे जिनकी साख दांव पर है, अशोक गहलोत, उनसे जुड़ा क्या अपडेट है वो आगे चल रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर अपडेट ये है कि वो आगे चल रहे हैं। जब से सरदारपुरा सीट पर अपडेट सामने आई है, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, वो निरंतर आगे चल रहे हैं और ये बढ़त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सरदारपुरा से चुनाव लड़े, वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, एक एक करके उन तमाम चेहरों से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। लवली वाधवा जयपुर से, उनसे जुड़ा अपडेट भी जान लीजिए। लवली वाधवा वो फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से, उनसे अपडेट लेते हैं, सीधे उनसे रुक करेंगे। और लवली, क्या अपडेट है आपके पास? 107 सीटों पर बीजेपी आ गई, 80 पर कांग्रेस आ गई। Disconnected. आदर्श बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। जयपुर से फिलहाल यहाँ की जो तमाम सीटें हैं उसको लेकर क्या आंकड़ा? देखिए, जहाँ तक आंकड़े की अगर बात करें, जयपुर शहर की जो जनरल की जो तमाम 19 सीटें हैं उसमें करीब करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में सीधे तौर पर टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। एक सीट शाहपुरा है जहाँ पर इंडिपेंडेंट जो आलोक बेनीवाल है उनको भी वोट अच्छी खासी संख्या में मिले हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है जिला कलेक्टर के कंट्रोल में, यहाँ पर Natwara is trailing Rajyavardhan Rathore, who was with India Today this morning, currently leading in Jotwara. In Saranagar, Rajendra Rathore of the BJP is leading. Gaurav Vallabh, famous Congress spokesperson, you see him on TV, is trailing
Satish Pune of the BJP is trailing. Pratap Khacharyawaz of the Congress is leading. Vishwaraj Mewat is very interestingly against C.P. Joshi and Nathwada. Hanuman Beniwal is leading. And Vikhrolilal Meena in Savai Madhopur is leading. The Kumari of the erstwhile Principality of of Jaipur is leading. Mahant Balaknath is leading. And Bhagirath Chaudhary of the BJP is leading in Kishangarh as well. One of the interesting ones is Satish Punia because he was the party president till about 8 months ago. He is seen as a dark face of the BJP and he's trailing in Amer, tough constituency for the BJP just outside Jaipur. So he could be one name if he loses stock of that chief minister list. But Piyush Mishra is joining us from outside the residence of one of the men of the moment. Shivraj Singh Chauhan could be creating history, become the first chief minister to win five in 5 times North Indias of the BJP. Piyush Mishra, what's the mood? Has Shivraj Mamaji already celebrated and the lobby begun there, Piyush? Well, right now, as we are speaking, Shivraj Singh Chauhan is holding a crucial meeting with Jyotirajit Scindia. He woke up today early in the morning at around 6 o'clock, and since then, he's keeping a close watch on all the developments. As we are speaking, Jyotirajit Scindia has entered inside the residence of Shivraj Singh Chauhan, and now there's a one-on-one meeting between both the two leaders. Remember that Jyotirajit Scindia played an important role as far as the campaign for BJP is concerned. And right now, as we are speaking, the meeting taking place. After this, we can expect more leaders to arrive here at Shivraj Singh Chauhan's residence. Let me also try to show you visuals from right outside this very place. It's the residence of Chief Minister of Madhya Pradesh. This is Chief Minister House, Bhopal, and here you can see the nameplate also. A board is also signboard also where it is written Chief Minister House, Bhopal. The big that final tally is out after the results are announced completely. It remains to be seen if Shivraj Singh Chauhan is going to retain this house or if some other person from BJP itself will be becoming chief minister. Because right now, according to tally, BJP has already crossed the halfway mark. But as the BJP crosses halfway mark, the meetings have started taking place. Okay. Jyotirajit Scindia, one of the topmost leaders of the state, has now reached here at Shivraj Singh Chauhan's residence. We'll have to see who all are going to take part in this meeting, which is right now underway. Right, give us the key candidates because the one name that is striking out to me, and you can give us more out, is Prahlad Patel. Union Minister is leading. He's also an OBC face, potentially seen as a next generation leader for the BJP in Madhya Pradesh. So let's zip through all the key candidates in Madhya Pradesh. Shivraj Singh Chauhan in Budni is currently leading. Kamal Nath at this moment is trailing in Chhindwara. He's never lost Chhindwara as an assembly. Once his family, his wife lost in Chhindwara, but this is his pocket borough. Narottam Mishra is now leading. Previously, when we checked, he was trailing in Datia. Narinder Singh Tomar in Dimni is actually trailing at this moment. Kailash Vijayvargiya on the seat of Indore 1 is leading. Pagan Singh Khulaste in Nivas is leading. Prahlad Patel in Narsinghpur, that's the seat that Rajdeep was speaking about. The buzz in political circles, if you want to believe that, is if they're looking beyond Shivraj Singh Chauhan, he could be one of the faces. He's up against Lakhan Singh Patel of the Congress and Mahesh Chaudhary of the BSP. Prahlad Patel currently leading in Narsinghpur. Apart from him, Jayavardhan Singh, the son of Digvijay Singh, is at this moment trailing in Raghogad. Deepak Joshi, former Chief Minister Kailash Joshi's son, now fighting on a Congress ticket, is leading on his seat. Lakshman Singh, the brother of Digvijay Singh, is trailing at this moment. Interestingly, Jitu Patwari, one of the strong men around Rahul Gandhi at this moment. And apart, we look at Fakil. One more interesting name. वो हमेशा बनेंगे मुख्यमंत्री बन गया. Son lost, father is given a job. Son was seen with the threatening people a few years ago. Good old guy. Very well singing contest among MLAs would be right there at the top. और सुबह 8 बजे वो true Indori style में वो गाना आपको सुना. Interesting, I can show you. In terms of how the women candidates put up by the BJP are doing, there were 27 women candidates. 11 of them are winning. Amongst the male candidates of the BJP, out of 203, 117 are winning. If I do the same for the Congress, this is for Madhya Pradesh. 12 out of 30 female candidates of the Congress are currently leading. 87 of 200 male candidates are leading.
Rajasthan 99-83, the BJP thinks they've got this under control. The data at this moment suggests it's close. Everywhere else, the India Today exact poll told you already what the numbers were going to be like. What is also very clear is the BRS is not being wiped out. I think when you see a political party, still, it's not a party which is going to, and this is true of regional parties. I repeat what a political. They are 41. No, but not being wiped out. My point is, when you're wiped out, you're at 20 or 25. We've seen in Tamil Nadu in the past parties. Middle in politics. Agreed. There's a winner and there's a loser. No, all I'm saying is that. No, but I don't agree with what you're saying. No. See, if it's AIDMK versus DMK 2, then there can be a wipeout. You're at 90 course of the 5 years. This is what a wipeout in Telangana looks like. You've been hammered at the hustings. No, you've been. And it will get worse in the Lok Sabha elections. So what is clear is the BRS is going to face a serious challenge. KCR is not getting any younger. Exactly. He's going to have to find a new level leadership. Obviously, KTR and Kavita, we don't know whether there's a, Harish Rao, whether there's a next generation leader there. But do you really believe that KCR from the 1st of December 2009, 14 years ago, he served a 14-year period as an embodiment of Telangana. That it's run its course now. Do you believe that this is the end of the road for KCR if these numbers hold, or do you believe KCR is good enough for another fight? So he will put up a fight, but yes, the next generation of KTR and Harish Rao would take over. The biggest challenge for them would be now the Congress would want to do to KCR what KCR did to them. That is, poach their MLAs, especially in Hyderabad. And I'm told, I can tell you that talks have already started with possible winning candidates in Hyderabad. Not just that. When I listen to Congress leaders, they say when you're fighting a regional party, it's more you will have FIRs being filed against the BRS leaders like they filed against you. I mean, people don't know this story, Rahul. One of the reasons why Revant Reddy is determined to take on KCR, it was his daughter's wedding. And he was in jail. And he had to struggle. This is 2015, the cash. That's right. He had to struggle to get bail to attend his daughter's wedding. And I'm told he told someone, "Ek din mein aisa sabak sikhaunga isko, wo zindagi bhar yaad rakhega." But there's another very personal fight. No, but there's another lesson there. Whether it's the likes of, say, Bhupesh Baghel or now Revant Reddy, leaders can emerge in democracy if you're willing to look beyond Denison, the most obvious candidates who are lazy and not wanting to work so hard. Society, politics, the state, people just throw up a leader like you found in Revant. And we are seeing within the Congress, this regional satraps once again coming. Whenever Congress does something fresh, it works. Can I make a point? But still, in many places, it doesn't do fresh things. Yes. Just a point about Telangana. I think what the regions we were looking is slightly different. If you slice Telangana in east versus west, so don't do, just look at the map. Just look at the map you have there, Rahul. Don't slice the regions. Actually, we were thinking in terms of north, central, south. This is what it looks like now. You want to explain this? This is the last map of Telangana. It's called the power map, right? So it tells you where the power is coming from. Look at how strong green is all over. This is the new map of Telangana at this point. But if you slice it differently, what seems to be emerging that on the sort of western side, you still have BRS presence, but on the eastern side, which is Khammam, Mehboob district, towards Andhra. Yes, towards Andhra, it's a complete sort of does it have a spillover effect in Andhra Pradesh? But that's only in Khammam district and to an extent in but could it impact what happens in Andhra Pradesh? Yes, it will definitely impact what happens in Andhra. Districts are more similar to Andhra Pradesh than the way we were looking at it. So it would no, but in terms of development, I can tell you Telangana districts much better than the Andhra districts. Absolutely. Telangana actually is a success state in many ways. Look at their per capita income. Look at them on most welfare indices. Look at their paddy cultivation. It's a growing state. It is corruption at the local level, cornering of benefits by a few at the cost of many. The inaccessibility, the farmhouse chief minister, arrogance, the charges that you had to tie up with BJP, all of them have worked against. But an interesting one line on WhatsApp from a Congress leader on Telangana, where they're having their biggest, their best day. They said Telangana Rashtra Samiti called itself BRS. Now it should call itself NRS, Nowhere Rashtra Samiti. Nowhere Rashtra Samiti. So you see, you got Telangana is the big success story. Sunil Kanagulu, election analyst taken in by Rahul Gandhi into the ICC, spent a lot of time at personal investment in this. Because he's coming from a more old school of political management. Kamal Nath and Sunil didn't get along. Sunil got frustrated with him, came back to Telangana. You have to change the way you fight elections, Rashid sir.
Absolutely. I think aggression helps. In case of Bhupesh Baghel and Revant Reddy, it has helped. Way back, when Shivraj Singh Chauhan was nobody, he fought against Chief Minister Digvijay Singh in 2003. And as you know, Arvind Kejriwal had contested against Sheila Dixit. So it always helps. I think in the entire Madhya Pradesh campaign, the Congress lacked aggression. They were No, but taken the for question has to granted. be asked now is, should Rajdeep, the Congress, have thrown up somebody else instead of a Kamal India Nath? If ji they'd chale gone gaye. with a fresh face, India would they ji have chale done gaye. better? I think No, I'll make the point that taking off of what Rahul Verma said. Look, this is a BJP dominant. Sir, 1 minute. Till 6 months ago, You you must were allow, comfortable. no, you must allow me to Yes. respond. You make a fine point that Kamal Nath and Digvijay Singh have dominated the politics of Madhya Pradesh and the Congress. There was a time when Madhya Pradesh had a lot of Congress leaders. There were the likes of Arjun Singh, there were the likes of Madhav Rao Sindhya. Then you tried the likes of Kantilal Bhuria, you tried the tribal face, you tried Arun Yadav, OBC face, it didn't work. The point is, I think you got to accept Madhya Pradesh is a BJP dominant. See, you can't choose just a face from anywhere. A party which is also need a face who can the election. You can't just pick a person and say, okay, can I make a different point? Rajdeep, the point is that you throw up a fresh face like a Bhupesh Baghel or Revant Reddy, because with no disrespect to Kamal Nath, and I know odds on chances are he's watching us at this, he watches us very carefully. Chances are that with a younger face, you would have got some traction. People look at Shivraj Singh Chauhan, Kamal Nath doesn't look like a mass leader. No, just to finish, and Preeti, I'll get you in. The fact is they've tried and they've That the Congress in Madhya Pradesh would be nowhere without Digvijay Singh and Kamal Nath putting together a campaign. they're not, and just to add, and Preeti, I'll get you in. Just to add, contrast it with Chhattisgarh. Bhupesh Baghel is a product of what happened in 2013. Sadly, the entire Congress leadership there was wiped out in a terrible Maoist attack. They needed a new leader. Along comes Mr. Baghel and transformed the party. Now, Preeti, go ahead. Just 2 points. Sorry, because otherwise I'm accused of stopping you. Please go ahead. No, Rajiv, just Please 2 tell points. us. The 2 points I want to make. One, where Kamal Nath's politics was concerned, you can't be a bigger Hindu than a state which is steeped in Hindutva, where the BJP comes into question. Number two, I think the Congress will also need to go back to their drawing board, especially Rahul Gandhi. OBC, caste census, every rally, right? Look at our own numbers in terms of our exit poll numbers. The OBC has gone en masse with the Bharatiya Janata Party, right? 56%. What he also did in the bargain is, in a state which is got a decent amount of general and upper caste, you've totally alienated it. A loss of 13% for the Congress. Every rally, as per our poll, yeah. Every rally that I went to on ground, I heard that this is not going to work. He needs to change his stand. So now you have to go back to the drawing board. In fact, to take off from what Preeti says, this whole Congress narrative of an OBC census, which they're going to make a narrative for 2024. Without a strong OBC leadership on the ground, it's not going to work. Where is your OBC leadership on the ground, Rahul, to take the thing, to take the idea that you want a caste census, you're an OBC friendly party? It's not even you have an OBC, like Gehlot. You have an OBC in Rajasthan, but it's not worked in Rajasthan as well. Rajasthan, I will hold my horses before we make any broader comments on. As per our exit poll. But as per Madhya Pradesh, the fact is, it's a 50% OBC dominated state. You went to the people saying caste census, it's not worked. On the other hand, the OBC south of the Vindhyas in Telangana have come to you, even though the BJP there pitched itself as a party that will have a backward caste minister. One size doesn't fit all, Rahul, in Indian politics. It's time national leaders realized it. State elections are won on local narratives. Shivraj Singh Chauhan is a more credible, trusted leader than anyone that the Congress had to offer. Simple. See, Rahul Gandhi's obsession with the OBCization of the Congress, going back to the Uttar Pradesh election, where Beni Prasad Verma at one point was his chief political candidate. An OBC sort of bastion, strong constituency since the 70s. The other thing that's emerging from this data so far is that repeatedly about 10 lakh votes have been counted in Madhya Pradesh. That's a pretty robust sample size. 49% of those votes are for the BJP, 41 are for the Congress. This is going to be a one sweep for the BJP. And just imagine what is at play.
even the BJP in its own polls and all their feedback mechanisms couldn't pick up that they were winning this big. Every single journalist, reporter who traveled to the ground couldn't pick up that this was a wave. There was a wave under everybody's nose. The only thing that picked it up was the India Today post-poll study that was done, which actually showed the quantum of the victory. That, Rajdeep, is when it comes to data mining. No, no, Preeti and I are going to say this, and she will hopefully confirm. You that say it is- so, Nobody said sweep. we said BJP ahead. We came back saying Different from sweep. You never said sweep. I didn't say sweep. Okay, I said BJP. That number was 125. If it's one second, it's looking at 130 right now, but if the vote share gap is 49 versus 41, and if that holds, then 130 is going to go up. As of now,